Okay, children. So we'll begin the class. So once again, good morning to everyone. And I think today is the first class. I think na? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So all are ready. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Learn ma'am. something. Yes, Yes. ma'am. So during the class, you have to mute yourself. Understood, na? And I think, children, you are told, I think, to attend the class in school uniform. But I think you have not followed that rule. You don't have uniform? मैम नहीं है हमारे पास oh, मैम न्यू एडमिशन है Acha. Okay. So I'll begin the class. Today we are going to learn first chapter from supplementary, है ना? A tale of two birds. Do you know the meaning of tale? Tale of two birds. Tale, पूछ T-A-L-E. Tale means पूछ no. That is tail. पूंछ होता है tail. That is tail. This is tail. Okay. A tale of two birds means a story of two birds. Understood now? Tale of two birds means a story of two birds. Okay. All of you can follow me? Yes, yes ma'am. मैम yes Yes. yes So now we are going to learn about these birds. So once upon a time, I will give you the introduction. Okay. Understood, children? I will give you the summary. I will tell you all this. Then we'll start the chapter. So for my, I hope you will follow me, and I strongly warn you that you have to put your mic off. You have to mute yourself. Okay, and please attend the class in discipline way. Okay, please put on your video, all of you. Just I want to see you face to face, then I'll start. Yes, children, put on your video. Okay, can you hear me, bachche? My voice is audible? Yes, Yes. ma'am. yes मैम If you cannot follow, yes, bachche, if you cannot follow, if you cannot hear properly, you can just you let me know, okay? So once upon a time, there lived a mother bird, okay? There lived a mother bird, and आपको बीच बीच में मैं I think I will explain you Hindi also so that you will understand better, है ना? So once upon a time, there lived a mother bird and her two young ones. How many young ones? Two young ones in a forest. Okay. So in a forest, they had a nest in a tall tree. Tall tree means what is the meaning of tall tree? Big one. हाँ लंबा पेड़ में है ना? Lamba And pe. one day what happened? One day what happened? You know, there was a strong wind and thunder, lightning, and heavy rainfall. Okay. That time what happened? This mother bird, that tree fell down. That branches broke up and fell down, and that mothered bird, she died. Okay, she died. So these two young ones, they left alone without a mother, है ना? उनका मम्मी मर गई. ओके, मदर बर्ड डाइड ऑलरेडी, वो मर गई है. एंड ये जो दोनों है ना, दो बर्ड्स, दे वर लेफ्ट अलोन, वो अकेला हो गए, है ना? एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ज़्यादा बारिश और तूफान के वजह से व्हाट हैपेंड, यू नो, दे वर फ्लू टू दैट डिफरेंट डायरेक्शंस. उनको ये हवा का जो झोंका होता है ना, दैट वो क्या हुआ, उनको उड़ा के किसी और स्थान पे लेके चला गया. So one bird, what happened? One bird, it fell at the Rishikesh, at the Rishi's ashram, and the other one was near the cave of the gang robbers. ठीक है? So what happened? As they were growing up, उन लोग जब बड़े हो रहे थे, they used to learn something.
है ना, फ्रॉम दैट दोज पीपल विथ whom they were living, जिनके साथ उन लोग रह रहे थे, उनके जो भी वो बातें करते थे, वट एवर दे यूज टू बिहेव, हाउ दे यूज टू बिहेव, वट एवर दे यूज टू टॉक, है ना, जो भी उन लोग बातें कर रहे थे या जैसे भी बिहेव कर रहे थे, दिस birds used to learn from them. So luckily this robber, this cave, near the cave, that जो केव के पास में जो बर्ड वो वहां पर पहुंच गया था, दैट ही लर्नड द रॉबर्स टॉक, है ना, जो रॉबर्स है, अंकिता प्लीज म्यूट योरसेल्फ, हाँ, गुड. सो दे यूज टू लर्न, ही यूज टू लर्न द टॉक ऑफ रॉबर्स. सो क्या क्या सीखता था वो रॉबर्स से, उन लोग रॉबर्स जो हैं, जो चोर डाकू बोलते हैं ना रॉबर्स, सो उन लोग जो बातें करते थे, दैट ही यूज टू लिसन एंड ही यूज टू इमिटेट, वो नकल करता था उनका. सो क्या बोलते थे कि वट एवर बैड टॉक, है ना, बैड टॉक, दे यूज टू टॉक दैट टाइम, यूज टू हियर ऑल दिस थिंग्स. सो एक बार क्या हुआ, वन डे द किंग ऑफ दैट कंट्री केम टू हंट. हंट मीन्स शिकार करने के लिए आया ना, उस टाइम में ही कुड हियर द सम वॉइस, एंड that in the forest he lost the way. Who lost the way? The king. King अपना रास्ता खो गया. That is why he was sitting under the tree and resting. At that moment he could hear some voices, है ना, and that voice was a, when he looked up he could see a bird. Okay, एक bird को उनको दिखाई दिया, and what happened, that bird was telling, what he was telling, you know, quick, hurry up, quick, hurry up, someone is sitting under the tree, come and take his jewels and horse. So all this robbers used to talk, na? That's why he also have learned, this bird also have learned these things to say quick, hurry up, है ना, come and take the jewels and horses of that king. Whatever he is having, na, he is telling that you come and take it. So all this, because of that, those robbers, he has learned all these things. In other way, you can see here another bird. When king he got up and he went away to the ashram, then he could see the same, he that brown bird only, है ना, वो brown bird he could see, and they are looking the similar, उन लोग एक जैसा दिख रहे हैं, है ना, they are looking similar. So he was confused. Who was confused, you know? King. King was confused that अरे मैं तो इसी तरह के bird मैंने जंगल पे देखा था, forest पे देखा था, and now again this bird is here, how is it possible? So that bird said in gently voice that come, welcome to ऋषि आश्रम, है ना, इसका जो बिहेवियर है, दिस इज डिफरेंट. ओके, सो ही सेज दैट वेलकम टू ऋषि आश्रम, कम एंड सिट डाउन, हैव सम वाटर एंड टेक रेस्ट. सो ये जब सुनता है, जिस king was, when he heard this voice and his talk, he was so surprised, है ना, कि how is it that this bird is talking in different way but looking the same, है ना, they are similar, but his behavior was different from the first one, है ना. First bird was talking, what he was saying, quick, hurry up, है ना, someone is sitting under the tree, come take his jewels and horse. But this bird is telling, come, welcome to Rishi Ashram, have some food, water and take rest. So as soon as the bird saw the king, he started welcoming him, है ना. So you know that this is different from those, they are from the same mother, है ना, but behavior is different. So meanwhile, you know, then Rishi came, and both that king and Rishi, both of them were talking about those birds, those first one and second one, and they had their meal,
talking about the birds and about the problem what they or what is the situation about them. And then they said, after all, one is known by the company one keeps. सो आफ्टर टॉकिंग, सब कुछ बातें करने के बाद उन लोग क्या बोल रहे हैं, जो कंपनी में रहते हैं उसी तरह उनका बिहेवियर भी हो जाता है। एंड दे लर्न, उन लोग यही शिक्षा पाते हैं। इफ दे आर रिमेनिंग विथ गुड पीपल दे विल टॉक गुड थिंग्स, and if they are, but when they are remaining with the bad people they will learn bad things, है ना? As you know that first one, that bird was talking rubbish things, है ना, not good one, because he had learned from the robbers, है ना? But secondly, when you see second bird, he was talking good about welcoming people and telling them to rest, telling them to have some food and all, because he was living with the good people. So ultimately what you learn from this lesson is, what you learn, when we remain with the good people we become good. And हाँ, यस, जिसकी कंपनी में हम रहेंगे उसी तरह हम बन जाते हैं, isn't it? तो यहाँ पे आपको यही शिक्षा मिलेगा बच्चा कि स्टूडेंट्स की, हम जो कंपनी में रहते हैं, मीन्स इन विच काइंड ऑफ पीपल अराउंड वी आर लिविंग, है ना, दोज पीपल जो भी बातें करते हैं, जो भी उनका बिहेवियर है, वट एवर इट मे बी, वी बिकम लाइक देम, इजंट इट? तो ये स्टोरी आपको समझ में आई? Yes, ma'am. Just I have ma'am. given, yes, I have given you a short summary. Now we will see the lesson. I will share you the PDF, then I will read and I will make you understand each line. Okay, so please see here. Okay, can you see the screen, bache? Is Yes, it ma'am. visible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, so today I will read, and from next time I will give you chance. Please read the chapter, okay, before we start the class. So today I will read, and next time I will give you the chance. Okay, A Tale of Two Birds. What is the meaning of Tale of Two Birds? I have told you in the introduction. Ma'am, a story of two birds. Ma'am, a story of two birds. Yes, correct. Yes, correct. A story of two birds. Now you see the point one. 3 points are there now, black, that one you see. A mother bird and her two young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. Each found a different home. Now you will see here, mother bird is died already, and due to the strong wind and heavy rain. There one lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall tree, okay, tall shady tree, and there the mother bird took care of her ones, little ones day and night. So you see here कि ये जो एक मदर बर्ड थी एंड एक टॉल ट्री पे उन लोग रहते थे, एंड उनकी मम्मी जो है वो उनकी देखभाल करती थी। डे एंड नाइट मीन्स रात और दिन, वो दोनों टाइम वो उनका देखभाल करती थी। One day there was a big storm. What is the meaning of big storm? मैम बताओ तूफान बच्चे। या फिर यस, आंधी। करेक्ट, आंधी तूफान, है ना? आंधी। सो आंधी तूफान जब आई थी, यू सी वन डे देर वॉज अ बिग स्टॉर्म, देर वॉज थंडर, लाइटनिंग, रेन एंड अ विंड ब्लो डाउन मेनी ट्रीज। यू नो कि इतनी आंधी तूफान आई कि वहां के जितने भी पेड़ थे, मोस्ट ऑफ द ट्रीज इट फेल डाउन, गिर गया नीचे, है ना?
The tall tree in which the bird lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi ashrams a little distance away. See, when that wind was blowing too much, heavily, that time what happened? That branch, which where the nest was there, it fell down because that big tree hit that branch and it fell down. When it fell down, that mother bird already died, है ना, मर गई वो, उनकी मम्मा मर गई. एंड दिस बोथ ऑफ देम, इन लोग डिफरेंट डायरेक्शन में इनको तूफान ने उड़ाकर ले गया. एंड वन ऑफ देम लैंडेड, लैंडेड मतलब वो एक गैंग ऑफ रॉबर्स के पास गिरा है, और दूसरे वाला कहाँ पे चला गया है? ऋषि आश्रम में, लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम दैट प्लेस. डिस्टेंस मीन्स दूर, है ना, थोड़ा दूर पे वो ऋषि आश्रम था, वहां पे एक गिर गया है. हाँ, दूरी था, डिस्टेंस मीन्स. So day passed and the baby birds became big birds. धीरे धीरे what happened? Slowly, gradually, these two birds they grew up. धीरे धीरे बड़े होने लग गए हैं अभी. One day the king of the country came to the forest to hunt. So एक दिन क्या हुआ? That king came to the forest. जंगल में आया. क्या करने के लिए आया बच्चे? हंट करने, शिकार yes. करने के लिए. वेरी गुड, शिकार करने के लिए, हंट करने के लिए आए इन द फॉरेस्ट. ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट. इट ran deep into the forest followed by the king. See, soon the king lost his way and did not know where he was. जब वो शिकार करने आया था, that time he saw a deer. Deer means हिरन, okay? So उनके पीछे भागते भागते what happened? As he was following the deer, he lost his way. वो अपना रास्ता खो गया. And that king did not know where to go. है ना, उनको पता नहीं चल रहा था वो कि कहाँ जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे, वो उनका रास्ता खो गए थे. He rode on for a long time till he came to the another side of the forest. वो घूम घूम कर, है ना, he was searching for the way. रास्ता ढूंढ रहे थे. That time he did not know where to go. So he was tired, very tired by now. Very tired. That time what happened? He sat down under the tree. That he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Near a cave there was a tree. है ना, वो केव के पास क्या था? एक पेड़ था. So that king what happened? What he did? कि वो अपना हॉर्स वहां पे बांधा और क्या किया? वो पेड़ के नीचे बैठ गया, जो एक केव था, नियर केव. केव मीन्स यू नो बच्चे, केव का मतलब क्या होता है? यस, करेक्ट, गुफा. सो ये जो गुफा के पास, वो गुफा में कौन रहते थे यू नो? Gang of robbers. Robbers. Yes, gang of robbers. Gang means a group of robbers. Okay? तो ये ग्रुप ऑफ रॉबर्स, गैंग ऑफ रॉबर्स वहां रहा करते थे in that cave. So as that king was sitting there, suddenly he heard a voice crying out, quick, hurry up, there's someone under the tree. Please बच्चे mute yourself. तो ये when he was sitting near the cave, he could hear a voice that saying, quick, hurry up, there's someone under the tree, come and take his jewels and his horse. तो यही शब्द उनको सुनाई दिया कि जल्दी से जल्दी आ जाओ और ये जो हॉर्स एंड ज्वेल्स है उनको लेके चले जाओ.
hurry, all else he'll slip away. मतलब जल्दी आके ले जाओ, अदरवाइज ये यहाँ से चला जाएगा. The king was amazed. What is the meaning of amazed? Surprised. Okay. The king was surprised. The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. So, when he heard that voice, he saw he um, could see a bird on that tree sitting. Okay, that sitting, and what he could see that color is brown. Brown bird is sitting on that tree where the king is under that tree and that bird is on the tree. He also heard faint noises. Faint noises means not clear. Okay, issuing from the cave. Cave से उनको कुछ आवाज सुनाई दे रही थी, गुफा से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. तो तुरंत वो अपने हॉर्स को ले लिया और उन बच्चे म्यूट योरसेल्फ, बच्चे प्लीज. हाँ, म्यूट कर दो बच्चे, सारे बच्चे अच्छे बच्चे हो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. तो ये तुरंत अपने घोड़े पर बैठ गए एंड वो अपने हॉर्स को जोर जोर से भगा के वो वहां से चले गए, बिकॉज ही कुड हियर सम नॉइसेस फ्रॉम द केव. The king was amazed to hear a similar voice again. He came to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. Now you see in the second point that now he has reached to the ashram, rishi ashram, and now he is finding out about those birds, both of them, because their behavior is different. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. When he was coming on the way, he could see that there is a house and it looks like a ashram. एक घर दिख रहा था उनको और वो घर क्या था? वो आश्रम था. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Shade means? What is the छाया. meaning of छाया? पेड़ का छाया है ना. तो उसके पास में अपना हॉर्स को बांधा एंड वो पेड़ के नीचे बैठ गया. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram. Sir, please go inside and rest. The rishi will be back soon." तो देखो कितना अच्छा से बोल रहा है ना. Nicely he is welcoming, है ना. That bird is saying, "Welcome to ashram. Sir, please go inside." सर आप इनसाइड जाओ, अंदर में जाओ, एंड व्हाट यू विल डू? यू विल रेस्ट. आप रेस्ट करो एंड बाय द टाइम ऋषि विल कम सून. सून मीन्स जल्दी ऋषि आने वाले हैं. देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट. वो मटके पे कोल्ड वाटर है. प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. अपने घर समझ के you take rest, have some cold water. The king looked up and saw a big brown bird in the tree. So listening this, जब इसको ये सुनाई दिया, nicely he is talking, ये सरप्राइज हो गए कि ये कुछ कोई इंसान तो नहीं दिख रहे हैं, है ना. आसपास nobody is there around. Then who is saying this? So suddenly he looked up. तो उनको जब ऊपर देखा तो उनको एक ब्राउन बर्ड दिखाई दिया. He was amazed. फिर सरप्राइज हो गए. This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. तो ये किंग क्या बोल रहा है? इसी तरह तो मैंने अभी अभी जस्ट एक बर्ड देख के आया है जो कि
केव के पास में, and he was saying that quick hurry up, there is someone under the tree, come and take his jewels and his horse. ये बोल रहा था, लेकिन तुरंत अभी तो वही बर्ड है, बट ही इज सेइंग वेलकम टू आश्रम, प्लीज सर प्लीज go inside and take some cold water and make yourself comfortable. ये कैसे हो सकता है? So he was surprised, उसको सरप्राइज हो गया है ना. You are right sir, announced the answered the bird, he is my brother. तो वो बोलते हैं कि yes you are right, आप सही हो, and that bird is my brother, मेरा भाई है. He has made friends with robbers. वो अपना फ्रेंड्स किससे बनाया है? किसको बनाया है अपना फ्रेंड? रॉबर्स. मैम हाँ, रॉबर्ट यस, रॉबर्स को फ्रेंड बनाया है. ही नाउ टॉक्स एज दे डू. तो उन लोग जैसे बातें करते हैं, जैसे बिहेव करते हैं, उसी तरह वो वहां से सीख लिया है. दैट इज वाई ही इज टॉकिंग लाइक देम. उनके जैसे ही बातें करने सीख गया है. He does not talk to me anymore. वो मेरे से बातें नहीं करते हैं. He does not talk anymore. मतलब वो कभी मेरे से बात नहीं करते हैं. Because he talks rubbish things and he doesn't talk to me. If he यदि वो मेरे साथ बातें करता, then मैं उनको कुछ तो अच्छा बताता, या तो I would have made him to talk in a proper manner. Just then in ऋषि entered the ashram. धीरे उसी टाइम ऋषि ने अपना आश्रम के पास आ गया. ओके, यस, म्यूट योरसेल्फ बच्चे. किसी की आवाज बहुत आ रही है. बच्चे, यस प्लीज म्यूट योरसेल्फ. वेलकम सर. बच्चे म्यूट योरसेल्फ एवरीवन प्लीज. Welcome sir, he said to the king. Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while. Then you can share my food. So now Rishi came. He had gone somewhere. है ना, वो कहीं चला गया था. And now he has come back and he is welcoming to the king. वो king को welcome कर रहे हैं. And he is inviting him to share his food. वो बोल रहे हैं कि प्लीज कम इनसाइड, हैव सम फूड विथ मी. सो जब वो खाना खा रहे थे, द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली थ्रू दे लुक्ड सो अलाइक. तो ये बोल रहे हैं दोनों कि दोनों बर्ड दे लुक अलाइक, मीन्स दे लुक द सेम. हम लोग दोनों एक ही दिखते हैं, बट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दोनों बर्ड एक ही दिखते हैं, लेकिन बस फर्क क्या है यहाँ पे? दोनों का बिहेवियर या इनका जो हरकतें हैं, वट एवर द मैनर दे हैव लर्नड फ्रॉम अदर्स इज जस्ट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना. ऑल्दो दे लुक लाइक अ सेम, दे लुक अलाइक. अलाइक मीन्स सेम. The forest is full of surprises, he said. Forest, जंगल में सारे लोग क्या है? इनके बिहेवियर से सरप्राइज है कि how it possible, how could it possible that these people, this bird, they talk differently. Although they look alike, they look the same, but the different behavior is very much different from each other. The holy man smiled and said, after all, one is known by the company one keeps. That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people. तो ये बोल रहे हैं जो ऋषि है ना, आश्रम में रहते ऋषि, वो बोल रहे हैं कि आफ्टर ऑल
क्या है, हम क्या करते हैं, जो कंपनी में हम रहते हैं उसी तरह हम बन जाते हैं. So this bird has learned the robbers things. Robbers talk, and robbers what they do, robbing things, robbing people, all that he have learned from them. This one has repeated what he has always heard. और ये जो सेकंड बर्ड है वो क्या है, जो वो सुनता है वही वो रिपीट करता है ना. ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम. ये क्या करते हैं, वो पीपल लोगों को वेलकम करता है इन द आश्रम. नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट. आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड these birds. सो ऋषि सेज टू किंग दैट, क्या बोलता है, कम इनसाइड और रेस्ट करो. रेस्ट करने के बाद आई विल टेल यू what I will tell you. I will tell you the story about these birds. So both of them were talking. Okay, both of them were talking. Okay, can you hear me, bache? So this lesson you have seen, we have learned, and I think you have understood. Do you have any question? No, ma'am. No, ma'am. आपको समझ में आया है? अभिराज, Yes, समझ ma'am. में आया है? दिव्या, Yes. tomorrow when I take this again, I will give you the we'll discuss the question answer, but I will ask you the summary of it. ठीक है, आप लोग हिंदी या इंग्लिश में you have to read again this story. If you have any doubt, just let me know. आपको कुछ डाउट है बच्चे तो हम क्लैरिफाई करेंगे अभी, एंड टुमारो आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर विथ यू. No, ma'am. इट इज अ वेरी शॉर्ट. हाँ, डाउट नहीं है. वेरी गुड. जब भी डाउट है बच्चे, आप लोग बेझिझक होके पूछना है. ओके, डोंट गेट फ्राइटेंड. Yes, ma'am. ठीक है. Okay, ma'am. Okay, तो ma'am. हाँ, so this is a small story. Do you need in Hindi? मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूं? You have understood? आपको समझ में आ गया है या हिंदी एक्सप्लेनेशन भी चाहिए? मैम समझ में आ गया. क्या हुआ बच्चे? मैम समझ में आ गया. समझ में आ गया सारे बच्चों को? Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. that's good. If you have understood, you have to write the summary of it today. ठीक है, summary आप लिखोगे. ठीक है, छोटा summary about this chapter. I'll give you homework, and tomorrow we'll discuss this. I'll give you this one for a summary and a discussion of chapter question answers. मैम एक बार रिपीट करिए समझ आपने जो बोला. हाँ, जो कि ये जो है ना, ये चैप्टर, इसका समरी लिखना है बच्चे आप लोग को. छोटा समरी, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. व्हाट यू हैव अंडरस्टूड ओनली यू हैव टू राइट. आपको जो समझ में आया है ना, बस वही लिखना है. अंडरस्टूड ना? इज इट क्लियर? मैम हाँ. फिर हम क्या करेंगे कल, एक वन बाय वन यू विल रीड योर समरी. ओके, आफ्टर दैट विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग. इज दैट ओके? Okay, ma'am. सो सारे बच्चे आप लोग जो भी है, यू हैव टू राइट द समरी ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर, द टेल ऑफ टू बर्ड्स, and be ready for tomorrow. Okay, tomorrow we will have the class, I think at 9 no, tomorrow also in the same time, I think 10:30.
है ना? ठीक है बच्चे? Yes, Suhana, do you have any problem, bacha? I think you are a new admission. Can you follow me? हाँ, yes बच्चे, कुछ समझ में ना आए Yes, तो ma'am. बताना. Yes, ma'am. Okay, ma'am. So today we have completed chapter 1, isn't it? मैं नोटबुक में क्या करना है? हाँ बच्चे, if you have notebook, you have to do in your notebook itself. Okay? When school Yes, gets reopened, I will take your copies. So you have to keep ready and write neatly, clean and nice properly. You have to put the heading, chapter name, heading and all date wise. ठीक है? चैप्टर का हेडिंग भी डालना है. एंड टुडे आई विल गिव यू बच्चे. आज तो हमारा फर्स्ट क्लास है ना. हाँ हाँ हाँ, अभी मैं आप लोग को व्हाट होमवर्क आई विल गिव यू, दैट ऑल्सो आई विल पुट यू इन द ग्रुप, है ना? आपके लिए ग्रुप में डालूंगी. देन यू विल हैव द you will have no confusion in. Okay, everything Okay, has to be written in your note copy. क्योंकि नोट कॉपी बाद में क्या हो जाता है बच्चे कि इधर उधर कहीं और लिख देते हो नोट्स एंड यू कांट फाइंड आउट, है ना? यू सर्च एंड सर्च फॉर इट, देन अगेन यू हैव